आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इन्वोकेशन से करेंगे। भगवान का नाम लेके करेंगे। To the Supreme God, to the Great Divine Father and the Great Divine Mother, thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine power, divine healing, guidance, mercy, help, and protection. We thank you. To our great spiritual teacher, to all the great spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great ones, we thank you for your great blessings, especially to the great Swami Rama and his great teacher, the one known as Bengali Baba. We very humbly thank you for your great blessings. Thank you so much. Thank you. All right. हम लास्ट टाइम जो बुक पढ़ रहे थे उसका नाम है लिविंग विद हिमालयन मास्टर, और एक सेक्शन जो 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 हम पढ़ रहे थे उसका नाम है आई थॉट आई वाज परफेक्ट। टाइम है तो हम शुरुआत से पढ़ लेते हैं इसको, बीच से पढ़ के फायदा नहीं है ना। As a young man, I thought I had perfected myself and I didn't need any further teaching or study. I felt there was no Swami in India as advanced and as I, because I seemed to be more intellectually knowledgeable than others, and I was myself teaching many Swamis. When I conveyed to my master this inflated opinion of myself, he looked at me and asked, "Are you drugged? What do you mean?" I said, "No, really. This is the way I feel." He returned to the subject a few days later. "You are still a child. You only know how to attend college. You have not mastered four things. Master them, and then you will have attained something." So, you have a desire to meet and know God, but have no selfish desire to acquire things for yourself. Give up all anger, greed, and attachment. Practice meditation regularly. Only when you have mastered these four things will you become perfect. This is amazing. Very simple, no? Have a desire to meet and know God. Have no selfish desire to acquire things for yourself. Give up all anger, greed, and attachment, and practice meditation regularly. कितनी अच्छी बात है, चार चीजें बताई, simple. Then he told me to visit certain sages. He said, when you are with them, you should be very humble. If you become obstinate or aggressive, you will be deprived of their knowledge. They will just close their eyes and sit in meditation. He said this because he knew that I was very obstinate and impatient. इन्होंने कहा कि आप जाओ, जाके बाकी सेजेस से भी बात करो, बाकी के सेजेस जो हैं उनसे जाके मिलो, उनसे सीखो। इनको पता है कि ये मतलब स्वामी रामा उस टाइम पे काफी इम्पेशेंट हुआ करते थे, एंड सो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए मतलब कि तुम तुम परफेक्ट तो कहीं से भी नहीं हो, तुम बच्चे हो अभी, यू नीड टू गो मीट दिस पीपल, जाके इनसे सीखो। अगर तुमने इनसे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस दिखाया तो वो चुपचाप से अपनी आंख बंद कर लेंगे और तुम्हारे तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। तो ये he gave me a list of sages of different orders. Orders का मतलब जैसे कि अलग अलग ऑर्डर होते हैं, जैसे कि अपना ये युक्तेश्वर जो गिरी जो थे वो गिरी ऑर्डर के स्वामी थे। और इस तरीके से शंकराचार्य के अपने ऑर्डर होते हैं, बाकी ग्रेट सेंट्स के अपने अपने ऑर्डर्स होते हैं ना। तो इस तरीके से एक अलग अलग ऑर्डर्स के सेंट्स को जाके मिलने के लिए इन्होंने बताया। He gave me a list of sages of different orders. They were his friends who had known me from my young age because I had been with my master when he visited with them. I had been quite mischievous. I used to pester them and throw things so that they know I was around. Whenever they came to visit my master, they would ask, "Is he still with you?" First, I went to see a Swami who was renowned for silence. He had withdrawn from worldly concerns no matter what happened around him. He never looked up. आसपास क्या हो रहा है इन स्वामी जी को पता नहीं होता था।
मतलब वो बिल्कुल साइलेंस में ही उन्होंने अपनी सॉर्ट ऑफ प्लेज ले लिया था. On my way, I've talked with villagers nearby. They told me he doesn't talk to anyone or look at anyone. He doesn't even eat. This is the third month he has been in the same place without getting up. We have never seen such a man. 3 महीने से वो आदमी एक ही जगह पे बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं करता, कुछ कुछ खाना भी नहीं खाता, कुछ नहीं करता. This state is called Ajgar Vritti, which means Python's tendency. Just as a python remains dormant state for a long time, some sages do not move for many days, but remain in deep state of meditation. Good, no? When I went to see him, he was lying on a hillock under a banyan tree, smiling with his eyes closed, as though he were a lord of the universe. He never wore anything, whether it was summer, winter, or the rainy season. His skin appeared weatherproof, like that of an elephant. He did not own a thing, but he was utterly content. मतलब ये है कि जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वो बैनियन ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, आंख बंद करके स्माइल कर रहे हैं, जैसे कि वो सृष्टि के राजा हैं. कुछ नहीं पहनते थे. उनकी स्किन मतलब इस तरह की थी कि उनको किसी भी चीज़ का इफेक्ट ही नहीं होता था. समर का, विंटर का, रेन का, किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता था. और उनके पास कुछ भी कपड़े तक नहीं थे एक्चुअली, पर बहुत ही कंटेंट थे अंदर से. When I first saw him lying that way, लेटे हुए थे, बैठे हुए, लेटे हुए थे. When I first saw him lying that way, I thought at least he should have a little decency. Then I thought my master told me to visit him, and I know that my master would not waste my time. I'm only seeing his body. I touched his feet. According to our custom, when we touch the feet of great men, they bless us. He was not sensitive to external stimuli, he was somewhere else. 3 or 4 times I said, "Hello, sir, how are you?" But he did not respond. There was no movement, no answer. Then I started massaging his feet. When our teachers are tired, we often do that. I thought he would be pleased, but he kicked me. That kick was so strong that I was thrown backwards all the way downhill, which was quite steep, and into a lake below. I fell against many trees and rocks on the way down and ended up with many painful bruises. I was vindictive. मतलब उस समय तक तो इनको रिवेंज की टेंडेंसी आ चुकी थी कि जो है, what reason has he to do this? I came to him in reverence, started massaging his feet, and he kicked me. He is not a sage. I'll teach him. I'll break both his legs. I'll give him double what he gave me. I really wanted to retaliate. I decided that perhaps my master sent me to him to teach him a lesson. When I returned to the hill to vent my anger, he was sitting up and smiling. He said, "How are you, son?" I said, "How am I?" After kicking and knocking me down the hill, you asked me, "How am I?" He said, "Your master told you to do 4 things, to master 4 things, and you have even destroyed one. I kicked you to test your control of anger. Now you are so angry that you cannot learn anything here. You are not tranquil. You are still very immature. You don't follow the spiritual teaching of your master, who is so selfless. What could you possibly learn from me? You are not prepared for my teachings. Go away." Nobody had ever talked to me like that. When I thought about what he said, I realized it was true. I was completely possessed by my anger. He asked, "Do you know why we touch the feet of a sage?" Then he recited something beautiful, a Persian belief. A sage gives the best part of his life surrendering at the lotus feet of the Lord. People ordinarily recognize you only by your face, but the face of a sage is not here, it is with the Lord. People find only his feet here, so they bow to the feet. He said,
You should have that humility when touching someone's feet. Now you cannot stay here. You will have to go. I wept and thought, a few days ago, I thought I was perfect, but surely I'm not. Then I said, Sir, I will come back to you when I've really conquered my ego. And I departed. यहाँ से अभी तक क्या हुआ कि जो है इन्होंने क्या बोलते हैं हम, अपना एक सेठ से मिलने गए, और सेठ ने बहुत ही पावरफुल सेठ था, लात मार दी इनको, और वो जगह जगह पर इनको ब्रूज हो गए, चोट वोट लग गई इनको। आगे गुस्से में आके बोलता है कि इसको तो मैं अच्छा मत चखाऊंगा, मतलब इसकी तो टांगे तोड़ दूंगा, और शायद मेरे गुरु ने मुझे यहीं पे इसलिए भेजा है ताकि जो है मैं इसकी टांगे तोड़ सकूं, और समथिंग लाइक दैट। और इसी भ्रम में वो जब गुस्से में वापस आए, तो ये व्यक्ति अच्छे से बैठे हुए थे, फिर बात कर रहे थे कि क्या हुआ और तुम कैसे हो करके। तो बोलते हैं कि तुमने मुझे इतनी जोर से लात मार दी, मेरे यहाँ पे जगह जगह पे चोट हो गई है मुझे, अब तुम कैसे पूछ सकते हो कि क्या हुआ। ये बोला कि मैं तुम्हारा एंगर का कंट्रोल टेस्ट कर रहा था, तुम्हारे गुरुजी ने ये बताया तुमको कि अपने एंगर पे कंट्रोल रखो, और तुम बेसिक एंगर पे कंट्रोल रखने के बजाय तुम उसको एंगर को मतलब यहाँ वहां जाने दे रहे हो, अनलीश कर रहे हो एंगर को। तो ये तो खराब बात है एक्चुअली, ये तो नहीं करना चाहिए। एंड ही वाज लाइक कि दैट इज, बात तो सही है, मतलब कि तुम, वो बोल रहे कि तुम यहाँ पे कुछ सीख नहीं सकते हो, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, जब मेरी ईगो कम कर जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है। All the kicks and blows of life teach us something, no matter from where they come. They are blessings in disguise if we but learn their lesson. Buddha said, for a wise man, there is nothing to be called bad. An adversity of life provides a step for his growth, provided he knows how to utilize it. मतलब है कि कोई भी आदमी अगर वाइज हो, देखिए क्लेवर जो होता है ना, एक तो हम कुछ कैटेगरी को डिफाइन कर लेते हैं। एक होता है स्टूपिड यानी कि डम, जिसको समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर एक होता है नॉर्मल सा बंदा जो कि अपने नॉर्मल नॉर्मल काम करता है, उसकी बहुत ज़्यादा कोई विजडम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, एक नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, ठीक है। फिर एक वो आदमी होता है, वो होता है क्लेवर। क्लेवर का मतलब उससे ना आप अलग अलग तरह के तर्क वितर्क कर सकते हो, और उसकी अपनी नॉलेज कुछ नहीं है। जो नॉलेज है वो बोरोड नॉलेज है, बाकी बुक से यहाँ वहाँ से, और या बाकी लोगों से कुछ सीखी नॉलेज होगी। क्लेवर आदमी होता है ऐसा, और उसको हर चीज़ें पता होती है, मतलब ये कि इस आर्ग्यूमेंट को ऐसे टैकल करना है, उसको उसको ऐसे टैकल करना है, पर कुछ अपना कुछ ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसकी। आजकल जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो कि मतलब खाली बात करते हैं उसके बारे में, उनकी अपनी नॉलेज कुछ खास नहीं है एक्चुअली, पर वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, क्लेवर है। मतलब पॉलिटिशियन जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, वो उसमें उनकी क्लेवरनेस है, उसमें उनकी विजडम नहीं है एक्चुअली। सो विजडम इज नेक्स्ट लेवल होता है। विजडम में क्या होता है कि आपकी क्लेवरनेस वगैरह जो है वो माइंड के पूरे गेम्स पीछे पीछे रह जाते हैं, एंड यू अटेन टू एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रूथ इनसाइड ऑफ यू। तो उससे क्या होता है कि आप, सच क्या है वो ज्यादा मैटर करता है, कौन बोल रहा है कहाँ से आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, सच मैटर करता है, सच। तो ये जो है विजडम और क्लेवरनेस के बीच में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। तो हम अभी जो पढ़ रहे थे कि जो किक्स एंड ब्लोज ऑफ लाइफ जो होते हैं, वो हमको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, राइट। और अगर कोई वाइज आदमी होगा जिसको सच की पड़ी हुई कि सच क्या है, या लाइफ मुझे क्या सिखाना चाह रही है, कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है, वो हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख ही जाता है, इनफैक्ट सीख ही जाएगा एक्चुअली। आगे चलते हैं। I visited another Swami and determined that no matter what he did, I would not get angry. He had a beautiful farm. He said, I'll give you this farm. Would you like it? I said, of course. He smiled, your master told you not to be attached, and yet you are very quick to tie yourself to a farm. I felt very small. My mind seemed bent towards anger and attachment and not towards higher things. Later, I was sent to still another Swami. He knew that I was coming. There was a small natural fountain on the way where
where we used to go and wash. He left some gold coins there. I stopped there and I found three of them. For a second, I entertained the thought of picking them up. I did so and tucked them inside my loincloth. Then I reconsidered, but these coins are not mine. Why do I need them? This is not good. I put them back. When I still went to the Swami, he was annoyed. I bowed before him and he said, "Why did you pick up the coins? You still have lust for gold? Get out. This is not the place for you." I protested, but I left them there. He said, "You left them later on. The problem is that you were attracted to them and picked them up in the first place." Wah, bhai, wah. From the experiences that these sages gave me, I began to realize the differences between book knowledge and experiential knowledge. I began to see my many weaknesses and I did not find it pleasant. Finally, I returned to my master. He asked, "What have you learned?" "I have learned that I have intellectual knowledge, but I do not behave in accordance with that knowledge." He said, "This is the problem all intellectuals have. They become overly proud of their knowledge. Now I will teach you how to practice so that you will know." A human being knows enough, but that knowledge needs to be brought into daily life. If this is not done, the knowledge remains limited within the boundaries of knowing only. We all know what to do and not to do, but it is very difficult to learn how to be. The real knowledge is found in not in knowing, but rather in being. कितनी अच्छी बात है ना। मैं आपको कोई अच्छी चीजें बताने वाला हूँ अभी, शायद आपको सुन के पहले शायद आप शायद समझी नहीं भी होंगी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो ह्यूमन बीइंग जो होता है, ह्यूमन बीइंग के कोई भी जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अलग अलग शरीर होते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, राइट। फिर एक होता है एथरिक बॉडी, प्राणमय कोशा। फिर एक होता है एस्ट्रल बॉडी, कामा कोशा। फिर एक होता है मेंटल बॉडी, मनोमय कोशा। ठीक है। सोल, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। ठीक है। देखिए, सोल की जो लोकेशन होती है वो इतना तकरीबन सर से कुछ ऊपर होती है, ठीक है, एंकरिंग जहाँ पे होती है। मेंटल बॉडी जो है वो एक आपका मनोमय कोश होता है। एस्ट्रल बॉडी आपका काम कोश होता है या काम कोश होता है। आपके एथरिक बॉडी आपकी एनर्जी बॉडी होती है और फिजिकल बॉडी है। तो हम जब प्राणिक हीलिंग करते हैं तो हम इन सब की सब बॉडीज पे काम करते हैं, इन सारी की सारी बॉडीज पे हम काम करते हैं प्राणिक हीलिंग के द्वारा। इसलिए जो भी चीज मेंटल लेवल पे स्टार्ट होती है उसका हीलिंग यहाँ तक आते आते हो मतलब हो जाता है। सिर्फ इसको भी साफ करते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्राणिक हीलिंग काम होता है, बहुत साइंटिफिक है एक्चुअली। अच्छा, अब क्या होता है, अगर आप बहुत सारे नॉलेज अगर एक्वायर कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी बुक्स की जिनकी जो नॉलेज है वो पहले तो मेंटल बॉडी में आती है, बिकॉज मेंटल बॉडी आपकी एक्चुअल थिंकिंग करती है, ब्रेन नहीं करता। ब्रेन आपका खाली कैलकुलेटर होता है। ये है कि अगर आप, लेट्स एक्चुअली से दिस, कैलकुलेटर थिंकिंग वाले काम नहीं करता है, खाली कैलकुलेशन वाले काम करता है ना, खाली ट्रांसमिशन वाले काम करता है ना। ब्रेन आपका, फिजिकल ब्रेन आपका बिल्कुल वही वाले काम करता है कि उस नॉलेज को फिजिकल ब्रेन में रजिस्टर करवाता है बस। एक्चुअल थिंकिंग जो होती है वो यहाँ मेंटल बॉडी में होती है, एक्चुअली इस वाली में होती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में तो वो मतलब मेंटल बॉडी जो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, एक्चुअली बहुत बड़ी हो जाएगी। पर अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे लाइफ में, अगर आप उस नॉलेज को उतारेंगे नहीं लाइफ में, तो प्रॉब्लम है कि वो नॉलेज बस वहीं पे रह जाएगी, नीचे नहीं आ पाएगी और ऊपर से आने वाली सोल लाइट को ब्लॉक कर देगी। इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको सोल की कॉल समझ में नहीं आती है एक्चुअली में। जब आप इस नॉलेज को अपनी लाइफ में उतारेंगे नहीं, तब तक सोल की लाइट नीचे नहीं आ पाएगी और आपके लिए यही आपकी नॉलेज जो है आपका बैरियर बन जाएंगे स्पिरिचुअल पाथ पे।
इसलिए जो ग्रेट टीचर्स हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आप सपोज 10 मिनट लगा रहे हो किसी बुक को पढ़ने के लिए, 1 मिनट पढ़ो या 10% टाइम उसमें पढ़ो, और 90% टाइम जो है उसको उस उस पे मेडिटेशन करो, उस कैसे उतारा जाए अपनी लाइफ में, उस पे ध्यान लगाओ, उस पे सोचो। वो होता है मार्क ऑफ विजडम, नॉलेज जिसको फुल्ली लाइफ में उतार लिया गया हो, ताकि आप, ताकि जो क्या बोलते हैं, आपकी जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है और आपकी लाइफ बिल्कुल एक समान, बिल्कुल बराबर आ जाए। यहाँ जो पता है और यहाँ जो है लाइफ में, उसमें कोई फर्क ना रहे। विजडम बोलते हैं उसको। ठीक है। आपको समझ में आया कि कैसे अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ ली जाए, उनको उतारा ना जाए, तब तक एक मेंटल बॉडी में एक तरह का एक बैरियर बन जाता है, बैरिकेड बन जाता है, जिसकी वजह से सोल की एनर्जी जो है, सोल की लाइट आप तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्वामी रामा जिस समय जिस फेज से गुजरे थे, वो बिल्कुल ऐसा फेज था, इनको इंटेलेक्चुअल नॉलेज बहुत थी, पर उस नॉलेज को प्रॉपर्ली अपनी लाइफ में उतारा नहीं गया था। तो क्वालिटीज वाली जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाई थी एक्चुअली। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। Once I was teaching about life and death. A Swami quietly came in and sat with my students. I thought he was a beginner, so I treated him like I treated the others. I was annoyed because he only smiled, constantly smiled, while the others were very conscientiously taking notes. I finally asked, "Are you listening to me?" He said, "You're only talking, but I can demonstrate mastery over life and death. Bring me an ant." A large ant was brought. He cut it into 3 pieces and separated them. Then he closed his eyes and sat motionless. After a moment, the 3 parts moved towards each other. They joined together, and he revived and scurried away. And they revived and scurried away. I knew it wasn't hypnosis or anything like that. I felt very small before that Swami. And I was embarrassed before my students because I only knew the scripture without a first hand understanding and mastery of life and death. I asked, "Where did you learn that?" He said, "Your master taught me." Oh, God. At that, I became angry with my master and immediately went to him. Seeing me, he asked, "What happened? Why are you once again allowing anger to control you? You are still a slave to your violent emotions." I said, "You teach other things, but you don't teach me why." He looked at me and said, "I have taught you many things, but you don't practice. That is not my fault. All these achievements depend upon practice, not just on verbal knowledge of them. If you know about the piano, but you don't practice, you will never create music. Knowledge is useless. Knowing is useless without practice. Knowing is mere information. Practice gives direct experience, which alone is valid knowledge." वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत सारे लोग ना आजकल न्यू एज में फिलोसॉफिकल कोट्स देते रहते हैं, कि क्या क्या तो करते रहते हैं एक्चुअली, तो प्रैक्टिस नहीं करते उन चीज़ों की, स्पेशली जब डिफिकल्ट टाइम आता है लाइफ में, उस टाइम पे नहीं करते। सो यू नो जब आप उनको चेक करो कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कितना फर्क पड़ा, 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट कुछ ऐसे, हमारे स्कूल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि मतलब हाई लेवल्स को प्रैक्टिस करते हैं, पर अगर आप उनकी स्पिरिचुअल कॉर्ड होती है, आपका आपका एंटेना होता है स्पिरिचुअल ना, जब आप उसको चेक करोगे कि उसमें कोई फर्क कोई पड़ा है पिछले 10 सालों में, ऑलमोस्ट ना के बराबर फर्क पड़ रहा है। हम किसी को नीचे नहीं दिखा रहे हैं, बस ये मतलब बता रहे हैं कि प्रैक्टिस, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। खाली हाँ हम बस इस स्कूल से रिलेटेड हैं, ये है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। हम कभी कभी मेडिटेशन कर लेते हैं, हमारा हमारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। ये सब फालतू चीजें हैं एक्चुअली में। रियल चीज क्या है कि आपका हर सिचुएशन में आपकी अवेयरनेस, आपके फुल कंट्रोल में आपका इमोशंस होने चाहिए, आपके थॉट्स वगैरह भी फुल एक्सप्रेशन में। एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने शायद कल की मतलब शेयर किया था, एक
मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि ना, प्रॉब्लम हमारी इमोशंस की होती है ना, एंगर की। एक तरीका एंगर से डील करने का ये होता है कि आप अपने आप से बात कर लो, मन ही मन में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने आप से अपना एंगर एक्सप्रेस करो, अपने आप से करो कम से कम। जैसे कि मैं थोड़ा शांत यहाँ बैठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले को निकल से हमको गुस्सा लाया हुआ है, हम अपने मन में अपने आप से बात करते हुए एक्सप्रेस करें कि देखो उसके बिहेवियर से मुझे गुस्सा आया, मुझे, या उसने मेरी इज्जत नहीं करी, उसने मेरी कदर नहीं करी, उसने मुझे देखा तक नहीं, उसने मुझे जो है उसने मेरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की। गुस्सा तो आएगा ना। अब ऐसे करके अपने आप से प्रॉपरली बातें करो, अंदर करना, किसी के सामने मत करना। एंड जब आप when you see कि when you vented it out, completely vented it out, यू विल एक्चुअली फील कि आप, मतलब आपका सिस्टम जो है एक तरह से लाइट हो गया है अंदर से। अगर सामने वाला सुनने के लिए तैयार है तो आप उनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं। एग्रेशन में मत करिएगा, प्यार से बात करिएगा, वो जरूरी है। इमोशंस का डीलिंग बहुत जरूरी है एक्चुअली। और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके जिनके इमोशंस जो हैं वो, जिनको सिंपल प्रिंसिपल समझ में नहीं आते हैं। इमोशन की मास्टरी मेंटल बॉडी से होती है, ना कि इमोशन की लेवल पे होती है। पर रिलीज जो होता है इमोशन का, इंपॉर्टेंट रिलीज, वो इमोशनल लेवल पे ही रिलीज होता है। मेंटल बॉडी गाइड करती है, इमोशनल बॉडी उसको रिलीज करती है, राइट। तो रिलीज जो है एक तरीका उसका ये है, एमंग मेनी अदर वेज, कि आप प्रॉपरली अपने इमोशन किसी से व्यक्त करो। और कोई नहीं है उस टाइम पे, तो अपने आप से अपने सामने अपने आप को बैठा के प्रॉपरली व्यक्त करो। ये देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये हुआ। इमोशन, ये नहीं कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं सोच इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशन इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या फील किया, वो इंपॉर्टेंट है। उसको प्रॉपरली व्यक्त किया कीजिए, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। क्योंकि किसी से तो बोल पाए ना। या फिर एक काम कीजिएगा, अगर आपको अपने आप से नहीं बोलना तो अपने मन में उस आदमी को सामने बिठाइए जिससे आप गुस्सा है, मन में, और प्रॉपरली प्रॉपरली बात कीजिए। पर गुस्से में नहीं कीजिएगा, शांति से कीजिएगा। सामने वाला जो है सामने वाला जो है एक ना एक टाइम पे, क्यों क्या होता है कि जब भी आप इस तरह की चीजें करते हो तो सामने वाले की तरफ एनर्जी जाती ही जाती है। अगर आपने जो है, मैंने एक टाइम पे एक डायग्राम बनाया था कि अगर जो है अम, अगर आप सपोज एक आदमी है ए, और आप किसी बी आदमी के बारे में सोच सोच रहे हैं, तो अगर दूसरे आदमी के बारे में कोई कुछ सोचेंगे, तो वो सीधे निकल के आपकी ऑरा से, ये थॉट जो है वो इस सामने वाले की ऑरा में जाएगा। जाता ही जाता है एक्चुअली, हमेशा जाता है ऐसा, ठीक है। तो अगर आप सामने वाले को बिठा के अपने मन में बताएंगे कि देखो ऐसा हुआ, तुमने ये तो, तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा, यू नो। प्रॉपरली बात कीजिए कि देखो, यू वर डिसरिस्पेक्टफुल टू मी, यू वर रूड टू मी। तुम यही बात को आराम से भी बोल सकते थे, बट यू चोज टू बी रूड टू मी। तुमने अपने ऑफिस का गुस्सा मुझे यहाँ पे दिखाया, वगैरह वगैरह। प्रॉपरली बात कीजिए मन में। बिकॉज माइंड को डिफरेंस नहीं पता चलता है कि बात असली आदमी से हो रही है या माइंड में हो रही है। माइंड विल लेट गो। कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। द सेज फ्रॉम द वैली ऑफ फ्लावर्स। अरे वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो, जब हेमकुंड साहिब जाते हैं उसके रास्ते में पड़ता है। There was not much literature on the flowers and ecology of the Himalayas, but whatever was available, I tried my best to go through. One of the British writers wrote a book on the valley of flowers of the Himalayas. After reading this book, a flame of burning desire arose in my heart. In the Himalayas, there are countless varieties of lilies, rhododendrons, and other flowers, but I specifically was anxious to see one of the two valleys. There lived a sage constantly traveling in that region of the Himalayas where this valley of flowers exists. I knew him well. He was strong and healthy, about 80 years of age, but quite unusual. He used to carry a unique blanket all the time. It was very heavy,
The weight of this blanket was approximately 80 to 100 pounds. You might wonder how he made this blanket so heavy. Any piece of cloth which he found during his wide travels, he would patch onto the blanket. It was a blanket of 1,000 patches. He called it Gudari, which means blanket of patches. And people called him Gudari Baba. On my request, he said, if you really like to see the Valley of Flowers and want to follow me, you will have to carry this blanket. I agreed, but when I put the blanket on my shoulders, I stumbled under its weight. He asked, how is it possible for a young man like you to be so weak when you're apparently so healthy? He picked up the blanket and said, see how light it is? Then he put it on my shoulder again. He knew my master, and so he allowed me to follow him to the Valley of Flowers. As I was following him, this sage said, no one can retain his memory when he goes through the Valley of Flowers during the blooming season. We should bring all the obstinate kids like you here and set them right. Those who try to be intellectual and argue with us should be brought here so that they can understand their worth. I said, but I'm following you. He said, oh, yes. You argue all the time and don't listen attentively. You are very proud of your intellectual knowledge. I do not know how to read and write. You are more educated than I, but you have education, but I have control of mind. कंट्रोल ऑफ माइंड से याद आया कि एक टाइम ऐसा आएगा, बुक्स में लिखा है, मैंने अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे, कि जो है आप आपका जो माइंड होगा, आप उसे यूज कर सकोगे एज ए इंस्ट्रूमेंट टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द हायर वर्ल्ड्स। एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब ये है कि आपको एक टाइम के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली। आपको जिस भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, आप माइंड पे बाउंस करके यू कैन गेट उस सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हायर वर्ल्ड से आप उसे लेके आ सकते हैं, उसे प्रॉपरली प्रोसेस कर सकते हैं एंड यूज इट टू वट एवर आपको फिजिकल प्लेन पे जो कुछ भी काम है। सो यू कैन, आप इस माइंड को यूज करके, जो कि लिबरेटेड माइंड है, आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अ माइंड लाइक दिस एक्चुअली। सो ये ये जो चीज है, मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, ये आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप व्हेन यू गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू एनलाइटनमेंट। उसके पहले देखने के लिए शायद नहीं मिलेगी, बट उस टाइम के आसपास देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये बहुत ही अर्न सिद्धि होती है जिसकी की वैल्यू इस तरीके से होती है। I told him, I also have control. He replied, we shall see. I said, sir, first of all, please take away your blanket from my shoulders because it is very difficult to carry. He lamented, oh, the children of this modern age. He took his blanket from me and started conversing with it. Oh, my beloved blanket, nobody understands anything about you. No one knows that you are a living blanket. I looked at him and thought, this man is really crazy. The next morning, a Japanese monk joined us. He was equally anxious to see the Valley of Flowers. This Japanese monk also thought that Gudari Baba was a crazy man. He asked me, Rama, can you explain why this man is carrying such a heavy load? We started talking, and I thought would be nice to share these experiences with each other. This monk was afraid of going to the Valley of Flowers all alone. Someone had told him if any traveler goes to see this valley, he forgets everything and his senses do not coordinate in perceiving sense objects. The traveler loses his memory and smiles all the time. He said that this Baba was the right person to guide us because he traveled in this region and knew all the trails. The next day, this Japanese monk started shivering with fever. He had lived in the jungles of Burma and had suffered from malaria. He had a temperature of 103 to 104 degrees and his pulse rate was very high. The Baba said to him, you told this boy that I was crazy. Do you want to see the living power of my blanket? Do you know how this blanket is not a mere blanket but a living force? Do you want to get well? Then kneel down and humble.
The Baba covered the Japanese monk with a blanket. The monk said, I will be flattened. It's too heavy, and I am a small man. Baba said, keep quiet. After a few minutes, he took the blanket away from the monk. When he removed the blanket, it was shivering. The Baba asked the monk, what happened to your fever? He said, sir, I don't have a fever anymore. So Baba said, this blanket is very generous and kind and has taken away your fever. The Baba looked at me and said, do you want his fever to be cured forever? I said, yes, please. The Baba said, the Baba said, but he calls me crazy. I don't think he deserves my help. I said, the sages are all kind and great and they always forgive others. The Baba smiled and said, of course I will help him. We traveled together for 15 days and the Japanese monk did not suffer from fever again. 9 miles out of Badrinath is the side trail which leads to the Valley of Flowers, where there is a small Gurudwara, the Temple of Sikh. तो ये जो है हेमकुंड साहिब का है गुरुद्वारा. We took our meal there. The people of this temple knew Gudari Baba very well. We rested that whole day in the temple and started our journey to the Valley of Flowers towards Hemkund the next day. The flowers were in full bloom as far as the eye could see. For the first few hours, it was soothing to the senses and stimulating to the mind. But slowly, I started noticing that my memory was slipping away. After 5 or 6 hours, the Baba asked, hey, you, can you tell me your name? We were both so disoriented that we could not remember our names. We had completely forgotten them. I was only aware of my existence and had a hazy idea that I was with two other people. That's all. The fragrance of those flowers was so strong that we could not think rationally. Our ability to reason wouldn't function. Our senses were anesthetized. We had a faint idea of our existence and that of the things around us. Our talk to each other did not make any sense. We lived in this valley for a week. It was highly enjoyable. The Baba made fun of us all the time and said, your education and strength have no value. After we came out of the Valley of Flowers, the Baba said, your joy was because of the influence of the fragrance of flowers. You were not meditating. That's what marijuana and hashish do to people. And they think that they are in meditation. Look at me. I was not affected or influenced by the fragrance of those wildflowers. Ha ha ha. You have gone to college and have read many books. You have lived on the opinions of others so far. Today you had a good chance to understand and compare direct knowledge and the so-called knowledge which is really imitation. So far the opinions that you have are actually the opinions of others. Those who live on the opinions of others do not ever have the ability to decide and express their own opinions. Boys, disinformative knowledge is not considered by us to be real knowledge. Even if you understand that direct knowledge alone is valid, you don't have control over your mind. The education given to modern children is very superficial. Without any discipline, control over the mind is not possible. And without control over the mind, direct experience is impossible. Wow. The Japanese monk left for Bodh Gaya, and I lived with Baba for another 15 days. He is a free wanderer of this region, and all the pilgrims have heard about him. For practical schooling, it is important for the renunciates to live with such sages who have direct knowledge of the values of life with its currents and cross currents. एमओ में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किन्होंने क्या बताया. ऐसे क्विक ब्रीफर ये बताया गया था कि एक बाबा हैं जो कि हिमालयस के पास सॉरी वो वैली ऑफ फ्लावर्स के पास रहते हैं. वैली ऑफ फ्लावर्स एक इस तरह का रीजन था जहाँ पे कि अगर आप अकेले जाएंगे देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यू विल प्रॉब्ली गेट लॉस्ट, क्योंकि आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे एंड यू विल बी जस्ट इन अ वेरी हैप्पी स्टेट एंड आपको लगेगा कि मेडिटेशन कर रहे हो, बट वो खाली फ्रैग्रेंस की वजह से होगा. मतलब फ्लावर्स की फ्रैग्रेंस की वजह से होगा. आपके सेंसेस काम करना बंद कर देंगे एक्चुअली. तो ये बाबा का ब्लैंकेट बहुत ही भारी था. इन्होंने बोला कि तुम मेरे ब्लैंकेट उठाओ.
सीमिंगली यंग थे पर ब्लैंकेट उठा नहीं पाए, मतलब बहुत ही भारी ब्लैंकेट, काफी मतलब ब्लैंकेट था। 100 पाउंड कितना होता है? केजीज, 45 केजी का ब्लैंकेट, ओ बाय गॉड। 40-45 केजी का ब्लैंकेट होगा अगर, तो उठा के कोई कैसे कैसे चल पाएगा ना। तो ये जो है उसको उठा के मतलब अपने साथ लेके गए, एंड फिर उनको एक जापानीज मॉन्क मतलब वहां पे मिल गए। उनके साथ भी बात की। जापानीज मॉन्क को थोड़ा फीवर वगैरह आ गया, मतलब वो मलेरिया हो गया था उसको। बाबा जी ने ब्लैंकेट उसको उसको उड़ाया, 40 केजी का ब्लैंकेट, और फीवर थोड़ी देर में चला गया उसका फीवर एक्चुअली। परमानेंटली भी चला गया, मतलब सेकंड टाइम जब दोबारा किया तो। सो अब बात ये थी कि ये उनको ये सिखाना चाह रहे थे कि तुमने जितना कुछ बुक से पढ़ा है उससे उससे कोई उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चीज चीज नहीं है एक्चुअली। बिकॉज सबने फंडामेंटल चीज नहीं सीखी, जो कि माइंड का कंट्रोल है। माइंड का कंट्रोल वेरी सिचुएशन में बहुत बहुत काम आता है एक्चुअली। एंड कंट्रोल ऑफ माइंड जो है इज द ओनली थिंग विच कैन लीड यू टू रियल और डायरेक्ट गॉड रियलाइजेशन। कंट्रोल ऑफ माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब इन सब स्टोरीज में हमको ये देखने देखने के लिए मिल रहा है कि अलग अलग सेंट्स और सेजेस आके इनको बार बार समझा रहे थे कि अपना माइंड कंट्रोल करो, अपना माइंड कंट्रोल करो, अपना माइंड कंट्रोल करो। उसके बिना रियल नॉलेज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पॉसिबल नहीं है आ पाना। राइट, लेट्स गो फॉरवर्ड। कॉन्करिंग फियर। Fear is the greatest of all foes. It's a devil residing within. Fearlessness is the first rung on the ladder of freedom. First rung. The devil. One evening, my brother disciple and I had walked 30 miles in the mountains. 30 miles only one evening? My God. We stopped to rest 2 miles beyond Kedarnath. I was very tired and soon fell asleep. But my sleep was restless because of my extreme fatigue. It was cold and I did not have a blanket to wrap around me. So I put my hands around my neck to keep them warm. I rarely dream. I had dreamt only 3 or 4 times in my life, and all of my dreams had come true. That night, I dreamed that the devil was choking my throat with strong hands. I felt as though I was suffocating. When my brother disciple saw my breath rhythm change and realized I was experiencing considerable discomfort, he came to me. I'm sorry. He came to me and woke me up. I said somebody was choking my throat. Then he told me that my own hands were choking my throat. That which you call the devil is a part of you. The myth of the devil and of evil is imposed on us by our ignorance. The human mind is a great wonder and magician. It can assume the form of both a devil and a divine being anytime it wishes. It can be a great enemy or a great friend, creating either hell or heaven for us. There are many tendencies hidden in the unconscious mind which must be uncovered, faced, and transcended before one intends to tread the path of enlightenment. हम इनके बारे में बात करेंगे अभी। The trail to Kedarnath. बाप रे बाप, क्या बात है। Dreaming is a natural state of mind. It is an intermediate state between waking and sleeping. See, dreaming is an intermediate state between waking and sleeping. When the senses are prevented from receiving the sense perceptions, the mind starts recalling the memories from the unconscious, all the hidden desires to lie in the unconscious, waiting to find their fulfillment. When the senses are not perceiving the objects of the world and the conscious mind is at rest, then the recalled memories start coming forward and they are called dreams. Through dreams, we can analyze the level of our hidden personality. This analysis is sometimes helpful in curing certain ailments. With the help of meditation, we can consciously recall these memories, observe them, analyze them, and resolve them forever. There are various types of dreams. In addition to the painful and pleasant dreams which we ordinarily experience,
There are two other categories of dreams which need to be analyzed. One is prophetic dream and the other is mere nightmare. Sometimes prophetic dreams are guiding. Nightmares are the signs of intense agony created by frustrations. The latter can occur if someone is very tired or if he has a very bad digestion. I have never heard anyone claiming to have seen a devil in the daytime. My brother disciple, with the help of a smile, told me a rope in the darkness can be mistaken for a snake. The mirage in the distance can be mistaken for water. Lack of light is the main cause of such a vision. See, lack of light is the main cause for such a vision. Does the devil exist? If there is only one existence which is omnipresent and omniscient, then where is the place for existence of the devil? Those who are religiously sick believe in existence of the devil by forgetting the existence of God. A negative mind is the greatest devil that resides within the human being. See, a negative mind is the greatest devil that resides within the human being. Transformation of the negativity leads towards positive or angelic visions. It is the mind which creates hell and heaven. Fear of the devil is a phobia which needs to be eradicated of the human mind. बहुत अच्छी बात बताई थी इन्होंने यहाँ पे कि ठंड थी, ऐसे करके सो गए होंगे तो ड्रीम आ गया होगा कि डेविल जो है वो गला घोट रहा है। पर उनकी ब्रदर डिसाइपल ने उनको बताया कि डेविल नहीं था, आपके अपने हाथी थे जो कि ये वाला काम कर रहे थे। तो चलो वो भी ठीक है। एक उन्होंने अच्छी बात ये बताया कि सबकॉन्शियस में जो भी चीजें हैं उनको आपको निकाल के प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ता है ऑन द पाथ टू एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप ये मान लीजिए कि आपका 10% माइंड जो है, जो जिसको आप कॉन्शियस माइंड बोलते हो, पर 90% माइंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि वहां पे लाइट नहीं गई है अभी तक, वहां पे स्पिरिचुअल लाइट अभी तक नहीं गई है, प्रॉपरली इल्यूमिनेशन वहां पे नहीं हुआ है अभी तक। अगर आपका वो वाला माइंड प्रॉपरली इल्यूमिन हो जाए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो आपके पास सो कॉल्ड अनकॉन्शियस कुछ भी नहीं बचेगा एक्चुअली। इसीलिए जो है एक रिक्वायरमेंट जो होती है पाथ ऑफ एनलाइटमेंट पे, वो ये होती है कि आपके हार्ट के किसी भी कोने में कुछ भी ऐसा मैलिस न बच जाए, या इस बात का आपको ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपके चक्रास में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक भी चीज ऐसी ना रह जाए जो कि जिसको छाटा ना गया हो प्रॉपरली, हमने प्रॉपरली बार 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 न देखा हो। राइट, डू गेट दिस? सो इसमें सबसे अच्छी बात, इसमें एडवांटेज फैक्ट क्या होता है इसका, कि जब आपका माइंड खाली होना शुरू होता है तो आपको अपने ऊपर, अपने मोटिव के ऊपर प्रॉपर कॉन्फिडेंस आया था कि ये मेरा, मतलब मेरा मोटिव, आप आपकी जो क्लैरिटी ऑफ मोटिव होती है वो बहुत सॉलिड रहती है। मतलब आपको पता रहता है कि आप क्या चीज किस काम के लिए कर रहे हो, एंड आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके बाद, क्योंकि कोई डर नहीं रहता है उसके बाद। फियर जो है वो इन्हीं इन्हीं जगहों पर छुप छुप के में मतलब बैठा होता है। अब ये देखिए, सबकॉन्शियस को क्लीन करने के कितने तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात है कि सबकॉन्शियस का जो एक्सेस है एक तरीके से वो चक्रास के थ्रू होता है। अगर आपके चक्रास में अगर वो चीज़ है तो ही आपके सबकॉन्शियस में मिलेगी, अगर सब चक्रास में नहीं है तो सबकॉन्शियस में भी नहीं मिलने वाली है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लेयर्स एंड लेयर्स में चीज़ें रिलीज करता है। अभी थोड़ा सा किया, फिर बाद में थोड़ा सा करेगा, फिर बाद में थोड़ा सा करेगा। इसलिए प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चालू रहना चाहिए, हर बार रेगुलरली चालू होना चाहिए, ताकि इसी पीस में जब चीज़ें बाहर आती जाए तो जो है मतलब आपका माइंड क्लीन हो जाए। तो एक तरीका जो मुझे पता है उसको बोलते हैं प्राणिक साइकोथेरेपी। वो प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है। उससे आपका चक्र, यू कैन प्रॉपरली क्लीन देम लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर, एंड एवरीथिंग कैन बी ड्रिवन आउट। फिर एक टेक्निक अराटी योगा में सिखाई जाती है, उसको बोलते हैं द ब्लू ट्रायंगल टेक्निक। वो भी जो है बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और वो यूज होती है अपने सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, हम सबकॉन्शियस चीजें कॉन्शियस में लेके आते हैं, फिर साफ करते हैं, समथिंग लाइक दैट। सबकॉन्शियस का मतलब है कि आपसे बिना जाने तो वैसे भी साफ नहीं कर सकते हो। जानना एकमात्र तरीका होता है, और जानने के लिए आपको सोचना पड़ता है।
सोचते हो, जब आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो, तब वो चीज़ें कॉन्शियस अवेयरनेस में आती है, उसके बाद आप उनको निकाल पाते हो सिस्टम से, राइट? हीलिंग करके, चाहे कोई भी और टेक्निक लगा के। बाकी स्कूल्स हैं वो आई थिंक सेक्रीफाइसिंग बाय फायर वगैरह कुछ करते होंगे, तो उनका भी बिल्कुल सही तरीका है। हम लोग अपने यहाँ पे क्या करते हैं कि सुबह 7 सवा 7 बजे हमारा एक प्यूरिफिकेशन सेशन होता है। हम वो चीज़ें अपने सिस्टम से निकालते हैं और उनको सन को सेक्रीफाइस करते हैं एक्चुअली। सो अलग अलग टेक्निक होती है, सबकी सब टेक्निक आराम से काम करती हैं। ऑल द टेक्निक्स वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था सबकॉन्शियस माइंड का क्लेंजिंग एक्चुअली। और इन्होंने ये बताया कि ड्रीम्स जो होते हैं वो वेकिंग और स्लीपिंग स्टेट के बीच की चीज़ें होती हैं। यहाँ आपको ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी ये ड्रीम्स में आपको हेल्प भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिटिक ड्रीम्स हो गए, या कुछ इंपॉर्टेंट कोई फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसको दिखा दिया वो ड्रीम्स में ना, तो वैसा। अब एक काम करते हैं, नया वाला चैप्टर पढ़ने के बजाय लेट्स डू शॉर्ट मेडिटेशन। आपके बहुत अच्छा वो है, सेंसेशन आ रहा है। 5 7 मिनट्स का एक प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं आज, ठीक है? आप लोग को जिन जिन लोगों को नहीं पता है, ये इसको बोलते हैं यहाँ पे हार्ट चक्रा बोलते हैं। एक लोटस फ्लावर टाइप का होता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में यहाँ होता है, ठीक है? फिर इसको बोलते हैं यहाँ पे क्राउन चक्रा, सहस्त्र चक्रा बोलते हैं, और ऊपर की तरफ ऐसे खुलता है वो, ठीक है? चलिए, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लगाइए एक बार। अपने हार्ट चक्र पे फोकस कीजिए। सामने एक अर्थ को इमेजिन कीजिए, और हम अर्थ को ब्लेस करेंगे। अपने हैंड्स को ऐसे रेज कर लीजिए चेस्ट लेवल पे, अपने हार्ट चक्र पे फोकस करते हुए हम बोलेंगे, मे एवरी पर्सन, एवरी बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ be blessed with divine light, divine love, and divine power. Mercy of God. All the beings, all sentient beings be blessed with divine mercy of God. And a lot of love. अब हम लोग ओम मनी पद्मे हum का मंत्र साथ में चैंट करने वाले हैं। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। May everyone be blessed. अपने क्राउन चक्र पे फोकस कीजिए। May every person, every being in this world be blessed with divine light, divine love, and divine power, compassion and mercy. May everyone be blessed with divine love and divine healing. May they be soothed of their pain, their sorrow, compassion, and sickness. साथ में बोलिए, ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। अब अपने हार्ट और अपने क्राउन चक्र पे साथ में फोकस कीजिए। May all the spiritual disciples everywhere across the world be blessed with divine guidance, divine mercy, divine help, and divine protection. May they get all the guidance that they need and they deserve. So be it. अपने हार्ट और अपने क्राउन चक्र पे साथ में फोकस रखिए, अर्थ को ब्लेस कीजिए। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे
अपने हाथों को नीचे रखिए, अपने हेड के ऊपर एक यहाँ पे एक स्टार इमेजिन कीजिए या एक पॉइंट ऑफ लाइट इमेजिन कीजिए और उस पर ध्यान लगाइए। मैं ओम का उच्चारण 7 बार करूँगा। आपको उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखना है, ओम को सुनना है एंड डीप रिलैक्सेशन में जाना है। स्टिलनेस मेंटेन कीजिए। जेंटली कम बैक। हाथों को दोबारा रेज कीजिए। हम ब्लेसिंग करेंगे। May every person, every being in this world be blessed with divine light, divine love, and divine power. All beings be blessed with joy, abundance, and happiness. Every being is blessed with joy, abundance, and happiness, no exception. अब बोलिए, may all the excess spiritual energy from my system be released down to the great Mother Earth. Now, now. Good. Closing prayer करते हैं. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, thank you for your great blessings. Thank you to our great spiritual teacher, to all the great spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great ones. We very, very humbly thank you for your great blessings. Thank you so much. Thank you. Everyone, have a good time. अगली बार मिलेंगे तो और आगे पढ़ेंगे. ठीक है?
Take care. God bless.